नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, ये न्यूज़ आप लोगों के सामने से अभी हाल ही में गुजरी होंगी। और इस न्यूज़ में जो है आपने देखा होगा कि एक ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का फैसला है अभी एक दिन पहले, और ये बहुत ही एक अच्छा फैसला है जिससे बहुत सारे कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होने वाला है। ये है वेतन के बारे में, जो पे कमीशन होते हैं तो कई बार उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं, कट ऑफ डेट के बारे में डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं, और रिटायरीज और जो है सर्विंग एम्प्लॉयज़ के बारे में डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज इसमें जो इन्वॉल्व हुए थे, तो वो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने एक बहुत ही लंबा एक जजमेंट दी है। और ये जो है जजमेंट अब फॉर ऑल टाइम टू कम जो है ये इशू को सेटल कर देंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ जजमेंट की तरफ। ये क्या है ये जजमेंट और कौन से केस में आई है, इसका रेफरेंस भी मैं दूंगा। आप बने रहिए आखिर तक, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कृपया ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग बनाए रखें अपना, और वो जो है इन द शेप ऑफ कमेंट्स, फीडबैक, और इन द शेप ऑफ सब्सक्राइबिंग एंड इन द शेप ऑफ शेयरिंग इट मोर एंड मोर, ताकि बहुत सारे लोगों को, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होए और मुझे भी इंकरेजमेंट मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन से बेहतरीन, लेटेस्ट से लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट इस तरह से आप लोगों के लिए ला सकूं, ताकि आप लोग जो है इनको जो है यूज कर सके जब भी आपको कभी इसकी जरूरत पड़े। तो धन्यवाद, और चलिए मैं अब आपको ले चलता हूं सीधा जजमेंट की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक जो लीगल क्वेश्चन जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के सामने हुआ था राइज इस जजमेंट में, वो था what is involved in this case is the fixation of date for the implementation of the fifth pay commission recommendations when applied to the respondent corporation, that framing a policy concerning fixation of pay for the salaries of the employees, the extent of the revision, and even the date of its implementation are matter of undoubted exclusive executive decision making power. However, the manner of its implementation, the timing of applicability of a scheme, and its impact, especially where it results in exclusion of a certain section of public employees from the benefit, are subject matters of scrutiny of the court, especially when the complaint is of a discrimination and violation of Article 14 of the Constitution. This is one such case. तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि इसमें कितने सारे इश्यूज जो है एक साथ इकट्ठे जो है राइज हुए थे, और जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने जिनको एड्रेस किया है। और तो इसमें जो है पैरा 3 में जैसा आप देख पा रहे हैं, द अपेलेंट एसोसिएशन कंसिस्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज हु हैड सुपरएनुएटेड ऑप्टेड फॉर वीआरएस resigned or legal heirs of expired employees of the respondent corporation challenge a judgment of Bombay High Court Nagpur bench. In that proceeding, the appellants had complained of discrimination against the decision dated 29th March 2010 of the Industry, Energy and Labour Department, Government of Maharashtra. That decision denied the benefit of revision of pay scale as recommended by the Fifth Pay Commission to the employees of the Maharashtra State Financial Corporation who had retired or died during the period of 1/1/2006 to 29 March 2010. The decision of state made the revision of pay scale as a result of the report of the Fifth Pay Commission applicable to 115 employees of MSFC who were working as on 29th March 2010. The revision, however, given effect from 1/1/2006. तो आप अब समझ ही चुके होंगे कि इसमें क्या किया था एम्प्लॉयर ने, कि डिसीजन तो एप्लीकेबल कर दिया 1/1/2006 से, लेकिन उसने डिस्क्रिमिनेशन ये की कि जो 29 मई 2010 तक एम्प्लॉयज रिटायर हो चुके थे उनको ये बेनिफिट नहीं दिया गया था उसके एरियर वगैरह का, और जो एम्प्लॉय कंटिन्यू कर रहे थे उनको जो है ये दिया गया था। तो ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन थे, जिसके ऊपर जो है ये जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट को अप्रोच किया, और जो इसमें प्ली ली गई थी जो डिपार्टमेंट की तरफ से, वो था द appellants had urged before the High Court that denying them the benefit of pay scales was discriminatory and arbitrary because they were in continuous service and had even received the benefit of interim revision pending finalization of pay scales pursuant to the Pay Commission report. It was urged that those in employment on and after 29th March 2010 and those who continued in service after 1/1/2006 but retired before 29 March 2010 belong to the same category. तो ये जो इसमें एक जो कट ऑफ डेट लगाई गई थी, जो ऑन द फेस ऑफ इट आर्टिफिशियल लगती है, जब बेनिफिट 1/1/2006 से दिया गया है तो इसमें रिटायरमेंट का तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। और ये जो इनका जो है डिफेंस जो था इसमें,
By the impugned order, the High Court accepted the submissions of MSFC and the state that financial considerations were of importance in regard to grant or denial of monetary benefits. The MSFC had also urged before the High Court that the benefit was granted to those employees on the rolls of the corporation as on 29 March 2010 in order to motivate and incentivize them for better performance. तो ये जो है उसमें डिफेंस का रीजन दिया गया था कि उन्होंने क्यों इस तरह से जो एक कट ऑफ डेट लगाई थी कि जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनको ताकि वो एक इंसेंटिव दिया जाए, मोटिवेट रहे ताकि वो जो है बेटर परफॉर्मेंस करे, ये रीजन दिया गया था कट ऑफ डेट के लिए। तो ये सारे जो प्लीज को एट लेंथ जो प्लीज को कंसीडर किया गया, फिर इसके ऊपर जो एनालिसिस एंड जो कंक्लूजन है वो पैरा 21 ऑनवर्ड जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने इसमें किया है, और जो इनका डिफेंस ऑफ जो एम्प्लॉयर था उसको पैरा 26 में नोटिस किया है। It is noticeable from the facts that two justifications were provided by the MSFC to deny the benefit of pay revision in terms of the 5th Pay Commission recommendation. One, that it is in order to motivate the present staff to recover maximum amount in NPA accounts. The two, that the fixation of cut-off date falls within the state's policy making domain involving, among others, an important consideration which is the state's financial concerns, which the court should not interfere in. That on whether and what should be the extent of pay fixation are undoubtedly matters falling within the domain of executive policy making. At the same time, a larger public interest is involved, impelling revision of pay of public officials and employees. Sound public policy considerations appear to have weighed with the union and state governments and other public employees which have carried out pay revision exercises periodically, usually once a decade, for the past 50 years or so. ये जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन है ये। फिर जो पैरा 28 में जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रेफर करते हुए कहा है, Article 23 of the Constitution obliges the state to ensure that all workers, industrial or otherwise, are provided with a living wage and assured of a decent standard of living. तो इन सब डिस्कशंस के बाद जो पैरा 29 में ऑब्जर्वेशन आई है ऑनरेबल अपेक्स की कोर्ट की वो ये है, therefore the state and public employers have an obligation to address as a measure of public interest the ill effects of rise in the cost of living on account of price rise, which results in fall in real wages. This obligation should be discharged on a periodic basis, yet there cannot be any straitjacket formula as to when such pay revisions are to be made and to what extent revision should take place. As a general practice, the union and state governments have been undertaking such exercises each decade. जो फर्दर ऑब्जर्वेशन इसमें ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की है वो पैरा 36 में आई है। इसमें काफी जो पिछला भी जो केस लॉ था प्रेसिडेंट से उनको पूरा डिस्कस करने के बाद जो है पैरा 36 में जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने ये कहा है, इन द प्रेजेंट केस टू देयर इज नो डिनायल दैट द एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड प्रायर टू 29 March 2010 discharge the same duties as in the case of those who did thereafter. The quality and content of responsibilities assigned to them were the same. The respondents' decisions not to grant arrear prior to 1/1/2006 cannot be found fault with. However, not to grant any revision to those who were not in service when the order implementing the pay revision was issued and confirming it to those in employment is clearly discriminatory. The rationale that granting such pay revision only to existing employees would be to enthuse them to recover NPA amounts payable to MSFC has no rational nexus with the object sought to be achieved by the pay revision, which is to benefit employees and protect them from rise in the cost of living. In the present case, therefore, applying the ratio in the above decisions, it is clear that there is no distinction between those who retired or died in service before 29 March 2010 and those who continued in service and were given the pay revision. Those who worked during the period 1/1/2006 to 29 March 2010 and those who continued thereafter fell in the same class and further distinction could not be made. The fact that the MSFC did not recover any interim relief or ad hoc amount disbursed between
18 September 96 to 31 December 2005 towards recommendation of the Fifth Pay Commission also reaffirms that these ex-employees belong to the same class as those what that receive the benefit of the pay revision. The exclusion of retired employees who retired between 1/1/2006 and 29 March 2010 on achieving their date of superannuation is violative of Article 14 of the Constitution of India. तो ये जो है बहुत ही एक अच्छी ऑब्जर्वेशन जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते एम्प्लॉयज में कि वो रिटायर हो गए और वो भी सर्विस में है या किसी पर्टिकुलर कट ऑफ डेट और उसके पीछे जबकि कोई भी रैशनल रीजन बिहाइंड ना हो। फिर अल्टीमेटली जो है लेकिन वीआरएस एम्प्लॉयज के बारे में इसमें एक डिस्टिंक्शन की गई है जो कि पैरा 38 में है, वो है however in the opinion of this court employees who secured VRS benefit and left the service of MSFC voluntarily during this period stand on a different footing. They cannot claim parity with those who worked continuously, discharged their function and thereafter superannuated. VRS employee chose to opt and leave the service of the corporation. They found the VRS offer beneficial to them. Apart from the normal terminal benefits, they were entitled to an additional amount. Each of them was given was an ex gratia amount equal to month's salary for each completed year of the service. Other retired employees were never given such amounts. ये जो है फिर VRS के बारे में जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने उनको इस तरह से डिस्टिंक्शन की है और फिर इसमें जो है डिसीजन पैरा 39 में है for the above reason it is held that VRS employees cannot claim parity with other who retired upon achieving the age of superannuation. Likewise, those who ceased to be in employment for the reason of termination or their dismissal etc. would not be entitled to the benefit of pay revision. फिर पैरा 40 में जो है ये अल्टीमेट डिसीजन दिया है in view of the above findings, the impugned judgment and order is hereby set aside. The appeal is accordingly allowed to the extent that those who retired from the service of MSFC between 1/1/2006 to 29 March 2010 and the legal heir representatives of those who died during that period shall be entitled to arrears based on pay revision accepted by the corporation. Not only this, जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने इसमें जो है 8% इंटरेस्ट भी इसमें दिलाया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है जजमेंट आई है एक इस इशू पे और ये जजमेंट किस केस में आई है तो मैं आपको अब ये मैं अभी बताता हूँ। ये जो जजमेंट है ये जो है सिविल अपील नंबर 778 ऑफ 2023 है और ये है महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और ये जो डिसीजन जो आया है इसमें ये अभी है ये 2 फरवरी का है, 2 फरवरी 2023 का है बाय द ऑनरेबल डिवीजन बेंच कंप्राइजिंग ऑफ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्धा बोस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस रविंद्रा भट्ट। तो आशा करता हूं कि ये जो है जजमेंट आप लोगों के काफी काम आने वाली जजमेंट है और आप लोग जो है इसका जो है लिंक सेव कर दीजिए। वैसे मैं इसको जो है अपने उसमें प्लेलिस्ट में भी डालूंगा जो एक डाइजेस्ट सी बन रही है पे वाले और सर्विस मैटर के हेड में, तो आप वहां से भी इसको सर्च कर सकते हैं इजीली। और एक बार फिर बिफोर आई पार्ट कि काइंडली आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना फीडबैक दें और लाइक का बटन भी जरूर दबाएं। तो धन्यवाद, थैंक यू एंड गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।